Hello everyone. In the last section, in the last video, we talked about how we can achieve loose coupling via interfaces. We created a vehicle console interface, and all the vehicles, BMW, Ferrari, and Tesla, were implementing the interface. And we saw that in the main class, we just have to now create a vehicle, and a vehicle owner should have that vehicle. And the vehicle owner class, it was using vehicle console as primary constructor injection, and we were able to call all the functions on that. So as it was, we were able to achieve the first level of loose coupling. We still see that we have to create objects and have to pass those objects. So as I mentioned earlier as well, imagine in a per enterprise application we have to create thousands of classes and we have to inject those classes into each other. This is going to create a lot of complexity in the code, right? So we want to avoid that, and we want to give this responsibility to a framework to manager for these injections for us. And that is where Spring comes into play. Earlier in before Spring 2 and before Spring Boot 2, this is the Spring framework we talk about. We need the thing was very complex. You need to create XML files. You need to define what beans you want and from which classes. So it was very complex. But with the introduction of Spring Boot 2 onwards, we found that Spring team has worked really hard, and the Spring Boot framework which we are going to use, now we don't need to do all that hard work. Now we can just use annotations, and you can tell the hey Spring, please manage this component for us, and that's how it's going to work. So let's get started. Earlier we commented out this line. There's an application. I'll uncomment this, and this will, when I run this application, this will boot our Spring Boot application, and it will create an application context. So let me store this into a variable. I'll store this in a context variable, and now what I will do is I'll tell the Spring, hey Spring, please manage Tesla class for me. How can I do that? I'll write an annotation here known as component. Component is the basic annotation which I can use to tell the Spring, okay, hey Spring, please manage this entire class for me. And what Spring will do is Spring will initialize that object as a singleton, and it will store that in an application context. Okay, so once I do that, once I add that annotation, I'll also add annotation on vehicle in the class, because I also need this object as well in my application context. So I'll also here add the component annotation. I'll go to the main class, and now I will get the bean of that vehicle runner. Okay, so I'll just comment out this code because I don't need to initialize objects anymore, because I need to I will use Spring now to help me get the beans. So what I'll do is I'll create a runner object, a runner variable, and in that variable I'll get the bean of vehicle runner. So I'll call the function get bean, and I'll say vehicle runner class.java. Okay, so in this runner I'll have the same runner vehicle runner object which I was having previously when I initialized that object, but now I'm getting this object from a application context. I'm not initializing it myself, but Spring is doing that for me. And then I can again call runner.run. So let me run this application, and we can go further into how Spring works behind the scene. Okay, you can see the Spring application has started, and you can see Tesla is accelerating, Tesla is decelerating, and Tesla is stopped. Okay, so now let's understand some errors as well, because it's very important as move forward to read the errors and understand how different errors you can see when you're working with Spring. So let me go and comment out this annotation and run the project again. Okay, now you will see we'll get an error from the Spring. It will say, let's read out the error. It says parameter 0 of constructor and this cannot require a bean type of vehicle console but could not be found. Okay, so what does that mean? Understand this. So what happens is when we try to get this bean vehicle runner, it goes in vehicle runner class, and it finds another injected variable in primary constructor vehicle console, but we haven't initialized any object of vehicle console. So how is Spring is going to find out? What Spring was trying to do is Spring goes into its application context, it tried to search for any implementation of vehicle console, but it couldn't find any. Neither the Tesla was initialized, neither Ferrari, neither BMW. So when the code comes here, it finds that there's no implementation, there's no being present in the Spring context, so it throws an error. It also defines an action what we can do. So it is saying कि आप यहाँ पर और इसकी configuration में इसकी bean define कर दें. So here it is telling कि define a bean of vehicle console, but we know vehicle console is itself an interface. हम उसकी implementation की bean define कर लेंगे, तो we'll be able to work our way out. So let's say I can create a Ferrari bean here. Let's say last time मैंने उसकी करी थी टेस्ला की, अब मैं Ferrari की कर लेता हूँ.
मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट कंडीशन लगाई। अब होगा ये कि when I run the project again, Spring is going to traverse the entire project. It is going to find this annotation and it will say, hey, you want me to manage this class? Okay, I'll do that for you. It will come here and it will run the project. Let's see how it works. So now we'll see Ferrari BMW is accelerating because I have let's change the printing as well here. Ferrari is accelerating so that we can see the right printing in a console. So, so let's summarize what we understand so far. What we understand is, in order to tell the Spring to manage to create objects, we need to use make use of annotations. The first annotation we learned today was add component annotation. Whenever we define an add component annotation on a class, we want Spring to create that object and store it in application context. How it is doing, I'm going to show you in just a quick while. We need to define some some parameters, some logging configurations. Currently, what we can see is the info level logs. We can also see debug level logs, but for that we need to specify it in a property. Let's delete these files and let's go into application properties. And over here, I'm going to try logging dot level dot org dot spring framework spring framework, and here I can say debug. Okay, so essentially you don't need to worry about this much because we are going to go later into application properties. हम इसको डिटेल में समझेंगे how it does work. बट अभी ये सब चीज़ समझ लें कि हम लोग यहाँ पर स्प्रिंग को फोर्स कर रहे हैं कि show us all the debug logs. So there are different kinds of log. सबसे smallest level trace होता है, फिर debug, फिर info आता है, राइट. हम debug logs में देखते हैं कि स्प्रिंग बैक ऑफ द सीन क्या क्या चीज़ें कर रहा होता है, how it is initializing the application context, how it is initializing the beans. So we'll, with this enabled, we can see everything. Let me restart the project again. Okay, cool. Again, we can see this Ferrari is accelerating, decelerating, and stop. Let me search for, Ferrari, and let me go here. Yep. You can see it is saying that it identified there's one more bean. Yep, here. सो हमारे जो स्प्रिंग जब इनिशलाइज हुआ उसने देखा कि भाई हमारी कंपोनेंट की एनोटेशन कहाँ कहाँ लगी हुई. सो यू कैन सी इट आइडेंटिफाइड अ कैंडिडेट कंपोनेंट क्लास. दिस इज ये वाली कौन सी क्लास है हमारी, ये वाली है हमारी, लेट मी जूम आउट अ लिटिल बिट, फरारी क्लास. और ये है हमारी व्हीकल एनर्जी क्लास. ओके, और उसके बाद उसने क्या किया, इसने सिंगलेटन ऑब्जेक्ट बना दिए. यू कैन सी कि हमने फरारी का इट क्रिएट अ सिंगलेटन मीन. तो हमारा उसने एक ऑब्जेक्ट बना के अपने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में स्टोर कर दिया. जब भी हमें वो ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, उसकी इंस्टॉलेशन ऑलरेडी पड़ी हुई है. स्प्रिंग इज गोइंग टू फेच इट फ्रॉम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एंड रिटर्न इट व्हेनेवर वी नीड इट. वी डोंट हैव टू इंस्टॉल ऑब्जेक्ट एनीमोर. ठीक है. और यहाँ पर जो हमने व्हीकल एनर्जी की क्लास बनाई थी उसने उसको ऑटो वायर कर दिया, क्योंकि हमने वहाँ पर कंस्ट्रक्टर में डिफाइन किया हुआ था व्हीकल एनर्जी क्लास में. कंस्ट्रक्टर में हमने व्हीकल कंट्रोल डिफाइन किया हुआ था. तो उसने उसकी इंप्लीमेंटेशन जो कि फरारी थी उसने यहाँ पर आके इंजेक्ट कर दी ऑटोमेटिकली. दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन. हम लोग एक और तरह के इंजेक्शन पढ़ेंगे ऑटो वायरिंग, बट दिस इज वॉट वन ऑफ द इंजेक्शन इज डन. ठीक है. तो उसने यहाँ आके इंजेक्ट कर दिया और हमें बताना नहीं पड़ा कि भाई आप कौन सी व्हीकल चाहते हैं. एंड इट स्टार्टेड रनिंग द functions for it. That is how Spring works behind the thing. You can also see there are other beans in slide as well. But हमने जो कस्टम क्रिएट करे थे अपने वो ये थे. सही है. सो आई होप कि यू अंडरस्टैंड के हाउ स्प्रिंग वर्क्स एंड हाउ यू कैन वर्क अराउंड इट. एक और अगर को यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं. लेट्स से मैं अगर यहाँ पर फरारी पे भी जाके लगा हुआ ऑलरेडी, टेस्ला पे भी कॉम्पोनेंट कैनेडिशन को अनकॉमन कर देता हूँ. कैन यू अंडरस्टैंड कि अब यहाँ पर क्या होगा? विल दैट एप्लीकेशन रन फाइन या फिर अभी भी कोई एरर आएगा? पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या होगा. आई होप यू गेस इट राइट. अगेन वी विल रन इनटू अदर एरर. अब क्या मसला हुआ? सो व्हाट हैपेंस इज के हमने वे अपनी मेन क्लास में एक व्हीकल एनर्जी की क्लास को हमने वो बना दी थी, उसकी बीन बना दी थी. उसको हमने एट कॉम्प्लिकेशन लगा दिए. अब इसके पास कंसोल पे इम्प्लीमेंट व्हीकल कंसोल की इम्प्लीमेंटेशन बहुत सारी है हमारे पास, BMW, फरारी और टेस्ला. और हमने ये किया, हमने स्प्रिंग में फरारी का भी वो बना दी बीन और BMW की भी बना, टेस्ला की भी बना दी. फरारी की, हाँ, फरारी की भी बना दी और टेस्ला की भी बना दी. तो जब स्प्रिंग जाता है ढूंढने के लिए इम्प्लीमेंटेशन, उसको दो इम्प्लीमेंटेशन मिल जाती है, एक फरारी की मिलती है, टेस्ला की. और अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे व्हीकल अंदर में कौन सी वाली इम्प्लीमेंटेशन का यूज़ करना है, या व्हीकल फरारी का करना है या फिर हमें उसका करना है.
तो उसके दो तरीके होते हैं। यहाँ पर आप पहले एरर पढ़ते हैं। एरर कैसे कह रहा है, पेरीमीटर जीरो ऑफ कंस्ट्रक्टर रिक्वायर्ड सिंगल बीन बट टू वर फाउंड। और ये बता के दे कौन कौन से बीन फाउंड हुए। एक फेरारी का फाउंड हुआ है, टेस्ला का फाउंड हुआ। अब एक्शन नहीं बता रहे कि हमें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट एक्शन इट सजेस्टिंग कि आप ना प्राइमरी की नोटेशन यूज़ कर लो। प्राइमरी ये करता है कि जब हम प्राइमरी की नोटेशन किसी क्लास पर लगाते हैं तो वो ये करता है कि उसको प्रायोरिटी देता है, हायर प्रायोरिटी देता है। सो फॉर एग्जांपल जब अगर मैं फॉर एग्जांपल टेस्ला पर मैं अगर प्राइमरी की नोटेशन लगा दूंगा, तो व्हाट विल डू इज इट विल इंजेक्ट टेस्ला क्लास इन द व्हीकल रनर। ओके, हमने इसको बता दिया है एक्सप्लिसिटली। और सेकंड तरीका ये होता है कि हम क्वालिफायर यूज़ कर लें। ठीक है, जब हमारे पास सेम टाइप के बीन आ रहे होते हैं तो हम लोग क्वालिफायर से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बट आई विल स्टडी दिस इन लेटर, जब हम नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे तब बेटर समझ आएगा मोर। बट जस्ट इमेजिन देयर इज अनदर वे एज वेल। नाउ इफ आई रन द एप्लीकेशन आफ्टर defining Tesla as the primary beam, you will see the application is running again. Tesla is accelerating, decelerating. तो what we did was हमने हमारे पास दो इम्प्लीमेंटेशन पे हमने स्प्रिंग को बता दिए थे। तो स्प्रिंग के पास दोनों ऑब्जेक्ट बने हुए थे। स्प्रिंग कंफ्यूज हो रहा था कि भाई कौन सा वाला आपको चाहिए रन टाइम पे। सो वी टेल इट्स एक्सप्लिसिटली कि प्राइमरी यूज़ करके कि हे स्प्रिंग, आई वांट टेस्ला एज माई प्राइमरी बीम। मतलब ही शुड पुट दिस अनलेस स्पेशली स्पेसिफाइड कि मुझे फरारी चाहिए। So that is how you need to understand different kinds of error while working with Spring. And this is the most famous error which you will encounter most of the time, जो आपको बीन मिल नहीं रहा होगा या फिर अनसेटिस्फाइड बीन एक्सेप्शन आ रहा होगा। ठीक है, सो या आई होप के यू वर एबल टू सी के हम लोग किस तरीके से एक टाइटली कपल एप्लीकेशन जो हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, फिर हमारे पास इंटरफेस नहीं था, हम लोग व्हीकल क्लास में व्हीकल के नाम व्हीकल की टाइप चेंज कर करके बार बार रन कर रहे थे। वी मूव दैट फ्रॉम अ टाइटली कपल, फिर हमने इंटरफेस में इंट्रोड्यूस कराया। वी हैव एन इंटरफेस जिसमें हमने फंक्शन डिफाइन करे और फिर हमने अपने व्हीकल्स को इंटरफेस से इंप्लीमेंट करवाया। और फाइनली फिर हमने व्हीकल रनर में रादर देन एडिंग दैट व्हीकल हमने उसकी एक इंटरफेस लगाया था कि जो इस इंटरफेस को कंफर्म करेगा दैट कैन रन दिस फंक्शंस। ओके, बट वी सॉ कि इन द सेकेंड एडिशन एज वेल कि हमें बार बार ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ रहे थे एंड दैट ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैन ग्रो अ लॉट। वी कैन सी के जहाँ पर हम स्ट्रिंग यूज़ नहीं करते, वी कैन हैव 10 or 20 लाइन्स ऑफ कोड जस्ट इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट एंड डूइंग नथिंग। तो दैट्स वेयर फ्रेमवर्क स्प्रिंग फ्रेमवर्क किक्स इन। ओके, वो स्प्रिंग कहता है कि आप मुझे खाली बता दो कि मुझे क्या क्या मैनेज करना है एंड आई विल डू दैट फॉर यू। यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर बिजनेस लॉजिक। तो इसकी हेल्प भी होती है, इससे मसले भी होते हैं। वी एक्सप्लोर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, बट फॉर नाउ आई होप यू हैव अ बेटर आइडिया कि हमने किसे स्प्रिंग यूज करके यूज कपलिंग और इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्प्रिंग को दे दी। सो हमने यहाँ पर दो तीन की टर्म भी समझे। सबसे पहले एक था कि स्प्रिंग बीन, जो चीज़ें जावा के ऑब्जेक्ट जो स्प्रिंग इनिशियलाइज करता है स्प्रिंग उसको स्प्रिंग बीन्स कहलाता है वो, राइट। और एवरीथिंग विच इज स्टोर्ड इन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होता है वो उसको स्प्रिंग बीन्स कहते हैं। स्प्रिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में सारे आपको स्प्रिंग बीन्स मिलेंगे। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में आपको हमने देखा कि आईओसी कंटेनर जो आईओवी होता है, इन्वर्जन कंट्रोल होता है, उसका मतलब भी हम समझ गए कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे थे तो यह जिम्मेदारी हमारी थी कि हम लोग विल मैनेज द ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल। बट व्हेन वी गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्प्रिंग तो हम लोग कंट्रोल को इन्वर्ट कर रहे हैं। नाउ स्प्रिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाट इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल मीन्स एज वेल। तो हमने दो तीन की टर्म्स भी समझे, बट वील एक्सप्लोर मोर ऑन दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड वॉच आउट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।